Hi, this is Khushbu with another question of area related to circles. This is question number 28 from the vision exercise of R.D. Sharma. This says, in figure 15.91, this is the figure, ABCD is a rectangle, ABCD, ये rectangle बना हुआ है, with AB is 14. So is AB की length हमें given है 14 centimeters and BC is 7. This length is 7. Since it's a rectangle, that's why ये भी 14 centimeter होगी पूरी. And this will be 7 cm. Taking BC and AD as diameters, 3 semicircles are drawn. So सबको मान के हमने 3 semicircle बनाए हैं. Find the area of the shaded region. तो आपको shaded region का area find करना है. तो सबसे पहले अगर हम इसको ले लें और इस semicircle को ले लें, यहाँ से हमारे पास इन दोनों regions का आ जाएगा. इनको मार्क कर लेंगे. Then later on अगर हम इस rectangle के area में से इस semicircle का area subtract कर दें, तो बचेगी ये चीज. So first we'll do area of two semicircles. So area of two semicircles. दो semicircles means 2 into और semicircle का formula होता है half pi r square. So 2 into 1 by 2 into pi is 22 by 7. In case question में pi नहीं given, so that's why हम 22 by 7 use कर रहे हैं. Otherwise अगर given होता 3.14 तो हम वही value use करते. Radius is diameter 7 है, so radius will be half of it, so 7 by 2 into 7 by 2 because r square. So यहाँ पे 2 से 2 cancel, 2 1s are 2 11s are 7 से 7 cancel. तो ये आ गया 77 by 2 centimeter square. ये semicircles का area है. Now area of rectangle minus this semicircle. So area of rectangle ABCD is equal to L into B. So इसकी length हमारे पास है AB and width है इसकी BC. That means 14 into 7 means 98 centimeter square. Now area of this semicircle with CD as diameter. Area of semicircle with CD as diameter. इसमें CD diameter है. The semicircle का area means half pi r square. So 1 by 2 into 22 by 7 and radius will be 14 by 2 into 14 by 2 because ये diameter है. So 2 से cancel हो गया ये 11 7 1s are 7 2s are इसे 2 cancel. So 14 into 11 by 2 1s are 7s are means 77 centimeter square. अब rectangle के एरिया से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. So area of rectangle minus area of semicircle with CD as diameter. So this will be 98 minus 77. That means 21 centimeter square. अब total shaded region होगा area of shaded region. तो एक तो आएगा ये प्लस जब हमने सेमी सर्कल्स का निकाला था दैट मींस 77 by 2. तो एलसीएम लेके बनेगा 42 plus 77. So 119 by 2 means 2 5s are 2 9s are 18 5s are. So 59.5 centimeter square. This is the area for shaded region. So this was question 28 from R.D. Sharma. और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप एनसीईआरटी के अलावा आप आर.डी. शर्मा या कोई भी दूसरी रेफरेंस बुक यूज कर सकते हैं. वहां से क्वेश्चंस ट्राई कीजिए और इन केस कोई भी डाउट हो प्लीज डू राइट टू अस एंड डू सब्सक्राइब अस. गुड बाय.